Okay, so we are starting today new chapter, operational amplifier. So what is operational amplifier? So an op-amp is an सर ये कितने दिन का लेक्चर होगा सर पूरा टॉपिक? होगा 5-7 दिन चलेगा ही, 5 दिन चलेगा ही. अच्छा सर. An op-amp is an active circuit element okay designed to perform okay mathematical operations okay of addition, subtraction, okay, multiplication, division, okay, differentiation, okay, and integration. So op-amp can perform mathematical operations, okay, so that gives its name operational amplifier. So if you see a op-amp circuit, okay, so it is shown by a triangle, okay. So any op-amp has, most of the op-amps have 8 terminals, okay, 8 उसमें 8 pins होती हैं, but sometimes there are op-amps, okay, which have 10 pins, 12 pins, 14 pins. So most of the op-amp have 8 pins, okay, and out of this 8 pins 5 pins are very important, okay. 5 pins क्या है, इसमें 2 तो input है, so this is 2 input, 1 is output, okay, and other 2 where power supply is applied to the op-amp, okay. So this is VCC, this is the minus VCC, okay. So VCC is positive supply, okay. This is negative supply, okay. This is our output, and these 2 are input terminal. This is called inverting terminal, and this is your non-inverting terminal, okay. So why it is called inverting and non-inverting terminal? Suppose if I apply input to a inverting terminal, okay. So say this is my op-amp, okay, and here we have plus VCC, minus VCC. Now suppose if I'm applying, say this is my ground, non-inverting terminal is ground, and I'm applying some V input here, okay, and this is my V input, what I am applying to this inverting terminal. So what will happen, whatever output will get, okay, that output will be out of phase, okay, that output will be 180 with 180 phase shift, okay. So this is suppose, so this output will be with 180-degree phase shift, okay, that is inverted output, okay. This is inverted output, okay, with respect to input, with respect to input.
इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, तो सिमिलरली इफ यू अप्लाई योर इनपुट, ओके, this minus plus this terminal and this terminal. Okay, so if you ground your negative terminal and apply V input here, this is the output. If you apply V input, okay, so say this is VCC minus VCC, so you'll get same without any shift, without any phase shift. Okay, so that's why this terminal is called your, okay, non-inverted. Okay, non-inverted output, okay, in phase, okay, in phase with input. So that's the reason they call it non-inverting terminal and inverting terminal. Okay, now if you see our op-amp, okay, op-amp can work in two configuration. One is open loop configuration and other is closed loop configuration. Okay, so what is open loop configuration? When there is no feedback. Okay, when there is no feedback, अगर आउटपुट से इनपुट में कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, okay, so suppose I am applying here, say I am applying V1 here, V2 here, okay, so if there is no feedback, okay, आउटपुट से कोई पोर्शन लाके इनपुट में फीड नहीं कर रहे हैं, okay, then this is called open loop configuration. Okay, and similarly, हाँ बोले वो रिपीट कर देंगे सर, क्या कर रहे हैं? इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो अभी स्टार्ट ही किया है। ओके, तो हम बता रहे थे कि किसी भी इसमें ओपम में टोटल मैक्सिमम ओपम्स है उसके अंदर 8 टर्मिनल्स होते हैं। ओके, सो किसी में 10, 12, 14 भी होते हैं, पर मैक्सिमम में 8 टर्मिनल्स होते हैं। उसमें 5 टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 2 तो इनपुट होता है, 1 आउटपुट, ओके, एंड 2 जहां पर हम पावर सप्लाई देते हैं। ओके, सो ये 5 जो है टर्मिनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो ये 2 टर्मिनल्स हैं माइनस वाला, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे कोई भी सिग्नल देंगे तो आउटपुट में आपको जो सिग्नल मिलेगा वो दैट विल बी 180 फेज शिफ्ट, दैट विल बी विथ 180 फेज शिफ्ट। ओके, उसका फेज शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ओके, वी इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा दैट विल बी out of phase, that will be out of phase. Okay, similarly if you applying some input on non-inverting signal, okay, then there will be no change in phase. Okay, so you applying, suppose here you making ground this one and you applying signal here, okay, P input, then there will be in output there will be no change of phase. That's why the name is given input and inverting and non-inverting terminals. Okay, so now op-amp can work in 2 configuration. One is this open loop configuration. Open loop configuration में है कि यहाँ से आउटपुट से कोई भी फीडबैक नहीं ले रहे हम लोग। ओके, नाउ अदर सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इज this is, suppose this is V2, this is V1, okay, and if some portion of output is coming here, okay, through resistance RF, okay, so if some portion of output if we are giving back to the input, okay, अगर नेगेटिव में दे रहे हैं then this is called negative feedback, okay, and positive भी देंगे तो positive feedback. So most of the amplifier application, linear application, okay, require negative feedback. Okay, we'll discuss why. So this is your RF. So this is
this introduce, okay, this introduce नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, so that will be that introduce negative feedback. Okay, this is the output. So most of the linear applications of op-amp require that there should be negative feedback. Okay, now one is a property of op-amp is that, okay, that is output is saturable. Okay, so what is saturable property? Okay, saturable property. Saturable property क्या होती है कि the open loop gain or any open loop gain of this op-amp, okay, is very high. Okay, if you take an ideal op-amp, then this open loop gain is infinite. Okay, so if you are supplying, so the what op-amp do, op-amp senses the difference. Okay, so whatever difference you supply, your output will be A multiplied by V1 minus V2. Okay, so if V1 minus V2 is VD. Sir, this point मतलब output is always the sum of A times V1 minus V2. कौन सा? हाँ, ये इक्वेशन का मतलब कहाँ से आया? एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई करना. एम्पलीफाई करना. ओके, तो कुछ इनपुट दोगे, ओके, Yes, sir. और आउटपुट मिलेगा, और Yes, sir. आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या होगा? एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा. Yes, Okay, sir. so this is your open loop gain. Okay, so this is open loop gain and this is difference VD. Okay, V0 VD. So generally this open loop gain is very high, and in the case of ideal op-amp, this A0 is open loop gain is infinite. Okay, so whenever you supply some voltage, okay, VD, V input to this one or V difference, because op-amp sense only difference. Okay, suppose आपने कुछ VD दिया, अब क्योंकि गेन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बहुत हाई आउटपुट आना चाहिए, पर हाई आउटपुट तो आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, क्योंकि आपका VCC से तो फिक्स है. तो जो किसी भी op-amp का जो आउटपुट है वो इसके सप्लाई से ज्यादा नहीं हो सकता है. ओके, अभी मैंने यहाँ प्लस VCC प्लस माइनस VCC लिखा है, दोनों सेम लिखा है. यहाँ पे प्लस VCC माइनस VE भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, बट आउटपुट ऑफ एनी op-amp, चाहे वो ओपन लूप में काम कर रहा है चाहे क्लोज लूप में काम कर रहा है, ओके, उसका जो आउटपुट है दैट कैन नॉट एक्सीड द पावर सप्लाई, वरना तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से होगा? तुम्हारा सप्लाई इतना दे रहे हो और गेन ज्यादा मिल रहा है, वो कहाँ से आएगा? ओके, सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेबल प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या है? Suppose if I want to draw graph, okay, suppose I'm applying some, I'm applying some VD, क्योंकि डिफरेंस को ही सेंस करता है. ओके, एंड if it is an ideal op-amp, okay, तो मैं कुछ भी डिफरेंस दूंगा 0.001 या 0.0001, क्योंकि आपका आउटपुट तो आपका जो गेन है वो तो इनफाइनाइट है. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या कर जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा. दैट मींस दिस आउटपुट विल बिकम V saturation. ओके, प्लस V saturation. सर मतलब गेन इनफाइनाइट है तो VD कांस्टेंट हो जाएगा. V आउटपुट तो कांस्टेंट हो जाएगा ना भी. थोड़ा सा भी, जैसे आपने अगर सपोज 10 की 10⁻5 गेन है, ओके, तो और आपने इनपुट दिया 0.0003111 कुछ भी दिया, ओके, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो V सैचुरेशन से ज्यादा हो गया, V सैचुरेशन जनरली कितना होता है 15 से 22 वोल्ट. ओके, अगर वो 22 वोल्ट से ज्यादा हो गया, कम है तो लीनियर ग्राफ आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा. अगर ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा तो आ नहीं सकता है. ओके, मैक्सिमम, सो मैक्सिमम व्हाट विल हैपन, दिस विल सैचुरेट, क्योंकि बिकॉज़ वी आर अज्यूमिंग दैट दे हैव अ इनफाइनाइट गेन. ओके, सो आप कुछ भी वोल्टेज डिफरेंस दोगे, थोड़ा सा भी, वो आपका आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा. तो ये आइडियल. ओके, दिस इज आइडियल. एंड सिमिलरली इफ VD इज नेगेटिव, ओके, VD नेगेटिव, सो आई एम गेटिंग V1 minus V2.
is positive, okay, then this will saturate, output will saturate to V saturation, okay. And if V2 minus V1 is greater than 0, that is VD is negative, okay, then its output will become saturated at minus, okay. So this is minus V saturation, okay. So this is the property of a op-amp, okay, but no op-amp is ideal, so this is for ideal case, okay. So if I take practical case, okay, so practical case, this is your V output, okay, so this is your VD difference, this is minus VD, okay. So the graph, the transfer function, okay, this is called transfer function, okay. Relation between input and output क्या होता है? Transfer function. These are transfer functions. So this is plus VCC and this is minus VCC, okay. So suppose आप कोई input signal लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा. अगर जैसे ही उस आउटपुट का डिफरेंस और जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ए उनका मल्टीप्लिकेशन अगर बीसी से ज्यादा हुआ, ओके, व्हाट इज योर आउटपुट इज A0L इंटू V1 माइनस V2. अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे ही बीसी से ज्यादा हुआ, ओके, जब तक कम है तो जो आएगा वो आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा, ओके. तो इसी बेस पे आपके तो इसका मतलब एक लिमिट पॉइंट के ऊपर कितना गेन हो वो सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है. सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाएगा. इसीलिए तो जो डिफरेंस लगाते हैं हम लोग इन दोनों टर्मिनल्स पे, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी स्मॉल, ओके. सो इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस. ये कैमरा दिख रहा है क्या पूरा? कुछ कट रहा है क्या? नो सर, मुझे तो कटा हुआ दिख रहा है. कुछ यहाँ से कट रहा है, ओके, ठीक है. सो नाउ फॉर एग्जांपल, सर हाँ, ये आइडियल केस में पहले से ही ये सैचुरेट कैसे करा सर? भी वो इनफाइनाइट गेन है. गेन अगर इनफाइनाइट मान रहे हो तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो. 0.1, थोड़ा सा भी 0.1 लगाओगे, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा वो. ठीक है सर. ठीक है. तो नाउ वन क्वेश्चन केम नियर गेट 2012, ओके, इसी पे क्वेश्चन आया. सो दिस इज यू आर अप्लाइंग plus minus, okay, V input, okay, and here you are applying plus 5 volts, okay, and here is a one resistance, okay, and here there is one more resistance. So this resistance is 4 kilo ohm and this resistance is 1 kilo ohm, okay, and so I am applying here, okay, 5 volts, okay, 5 volts. तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? 1 किलो ओम पे कितना वोल्टेज आएगा? इफ दिस इज 5, 1 वोल्ट आएगा. सो दिस इज 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है. तो अगर V इनपुट, ये क्या ओपन लूप है? ओपन लूप मतलब इसका जो गेन है वो ज्यादा है. सो एंड दे हैव गिवन दिस पावर सप्लाई प्लस 10 वोल्ट्स माइनस 10 वोल्ट्स, ओके. तो 4 और 1 सीरीज में है ना सर? हाँ, तो सीरीज में है ना, तो ये 4 1 5 5 1 वोल्ट करंट आ जाएगा ना. वन कितना है करंट? 1 मिली एम्पियर इंटू 1 वोल्ट आ जाएगा ये. ओके सर. ठीक है. नाउ दे हैव गिवन वन इनपुट. क्वेश्चन में एक इनपुट दिया है. दिस इज देयर इनपुट, ओके. सो इनपुट इज V input. This V input is increasing from 0 to 5 volts. 0 to 5 volts, which is increasing, okay. So they are asking what is the waveform of output, okay. So if I want to draw waveform of output, V output, okay, and this is the level 1 volt, okay.
तो अब आउटपुट कैसा आएगा, कैसा आएगा आउटपुट बताइए। सर गेन कितना है सर? गेन तो इनफाइनाइट है, गेन से मतलब नहीं ना, कि ओपन लूप है तो इनफाइनाइट गेन है, बहुत हाई गेन है, बहुत हाई गेन है। तो सैचुरेशन की तरफ मूव कर जाए भी जैसे जैसे पहले ही से ही कैलकुलेट जैसे ये 1 वोल्ट, ये इनपुट आपका 1 वोल्ट से कम है, ओके, अगर ये 1 वोल्ट से कम है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट से कम पे नेगेटिव सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी -10 वोल्ट। जैसे ही 1 से ऊपर गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो गेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पे सैचुरेशन हो जाएगा, दैट्स इट, पॉजिटिव पे सैचुरेशन हो जाएगा। सो दिस विल बी द आउटपुट, दिस इज +10 वोल्ट, दिस इज -10 वोल्ट। तो इसी के बीच में वो जंप करेगा। ठीक है, सर आपके कहने का मतलब ये था कि Vin -5 अगर नेगेटिव है, हाँ मतलब -1 वोल्ट से नीचे आ रहा है हाँ, तो माइनस में जा। भी ये 1 वोल्ट है, अब यहाँ यस पे सर, सपोज 0.5 वोल्ट हो गया, तो ये यस सर, V1 - V2 नेगेटिव नहीं हो गया, यस सर, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो फिर वो इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सैचुरेशन जाएगा, अगर ये यस सर, यस सर। माइनस सैचुरेशन चला गया। और अगर जैसे ही इससे आगे गया पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव सैचुरेशन चला गया। ओके सर। क्लियर, ओके। सर सो दिस इज योर ओपन सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जेम में आया है, जेस्ट में आया है, सेम ऐसा ही उसका ग्राफ प्लॉट कराया है, वो भी हम देख लेंगे कल। ठीक है, so this was saturation property. Now we come to the circuit, equivalent circuit of our op amp. Okay, so if we draw the equivalent circuit of op amp, okay, so say this is my minus terminal, this is plus terminal, this is my V1, this is V2, and this is output, and here we have one resistance R0. Okay, here we have one source, plus to minus, this is a diamond shape voltage source, dependent source. Okay, and this is grounded, and there between input there are resistance R input. Okay, so this is your minus, okay, this is your plus. So this is your equivalent circuit of non-ideal op amp. The equivalent circuit of non-ideal op amp. Okay, so where Ri is the input resistance. Okay, so in the case of op amp, okay, ये ideal है या non-ideal भी है, input resistance is very high. Input resistance is very high, मतलब this is the order of 10⁵ mega ohm, 10⁵ ohms, mega ohms. Okay, so this input resistance is very high. In the case of ideal, this Ri become infinite. Similarly, this R0 is very low. It is around 10 to 100 ohm. तो RI इनफाइनाइट होगा तो V1 से V2 में करंट नहीं जा पाएगा ना। हाँ, वो डिस्कस करेंगे ना अभी आइडियल बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। ओके, सर्किट की, नॉन आइडियल की। ठीक है, सो इन द केस ऑफ नॉन आइडियल, ओके, सो RI क्या है, RI इज द इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको बोल दे कि सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस निकालो तो कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालोगे। ओके, सो R इनपुट इज द थेवेनिन equivalent resistance. Okay, seen at the input. Okay, similarly if we say R0, okay, that is output resistance. Okay, Thevenin
So this is input, okay, input resistance, and it is output resistance. Output resistance क्या है? Is the resistance, okay, is the Thevenin equivalent resistance seen at output, okay. So output पे जो Thevenin equivalent resistance है, that is your output resistance, okay. And gain काफी छोटा हो रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है। तो काफी छोटा लिखे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। ये R0 है, R0 अभी बड़ा करता है इसको, ये R0 या R इनपुट है, ओके। सो ये पे क्या है? अभी लिखा वो भी। अच्छा, सो आउटपुट रेजिस्टेंस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। जैसे ये इनपुट रेजिस्टेंस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द इनपुट, ओके। आउटपुट रेजिस्टेंस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन एट द आउटपुट, ओके सर, ओके। Just give me 1 minute. Okay. So this is and open loop gain, okay. Open loop gain is very high, okay, but and for, in the case of ideal it is infinite, okay. So this was for non-ideal case, okay. If it is the ideal op-amp, if this is the ideal op-amp, तो ideal op-amp की characteristics क्या होती है? Ideal op-amp, okay, ideal op-amp के अंदर क्या होगा? ओपन वोल्टेज गेन, ओपन voltage gain, okay, that is called AOL, open loop gain, okay, that is infinite, okay. Input impedance is infinite, RI, okay, RI is infinite. And then output impedance जीरो, ओके। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अभी ये काम किए हैं। विल स्लोली डिस्कस अदर प्रॉपर्टीज आल्सो। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं कि ओपन वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट, तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज जीरो, ओके, VD इंटू AOL, ओके, ये होता है। तो अगर मैं इसको AOL मेरा जो ओपन लूप गेन है, अगर मेरा V आउटपुट फाइनाइट है, ओके, सो VD कितना हो जाएगा? V0 अपॉन A ओपन लूप। अब ये फाइनाइट है V0 और ये इनफाइनाइट है, तो VD कितना हो जाएगा? इफ माई जीरो हो जाएगा, ओके। सो दैट मीन्स इन द केस ऑफ आइडियल ओपैम्प, ओके, इन द केस ऑफ आइडियल ओपैम्प पहली चीज तो ये है कि हम जब बोल रहे हैं कि ये R इनपुट इनफाइनाइट है, अगर R इनपुट इनफाइनाइट है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 था ना? हाँ, आउटपुट 0 था, इनपुट इनफाइनाइट है, तो इनपुट इनफाइनाइट है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट जाएगा ही नहीं, तो ये करंट 0 हो जाएगा, ये करंट भी 0 हो जाएगा, मतलब इसके अंदर टर्मिनल्स के अंदर करंट जाएगा ही नहीं, ओके, क्योंकि ये जाएगा तो माइक्रो एम्पियर में जाएगा, जिसको हम प्रैक्टिकली 0 मान सकते हैं। पहली चीज तो ये, ओके। सो तो प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, ओके, एन आइडियल ओपैम्प, okay, draws no current at the input terminal, तो इसके अंदर कोई करंट जाएगा नहीं, जो भी करंट आएगा वो अगर लूप है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है, ओके। नंबर 2 पॉइंट, ओके, दैट इज योर I1, say this is I1, this is I2, so I1 equals to I2 equals to 0, okay. Why? Because input resistance I is infinite, तो इसके अंदर कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, ओके। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सिंस गेन इज इनफाइनाइट, ओके, सिंस गेन इज इनफाइनाइट, सो क्या हो जाएगा आपका VD that is equal to V1 minus V2 will be 0. That means आपके क्या हो जाएगा V1 equal to V2. जैसे ही क्वेश्चन में बोल दे कि आइडियल ओपैम्प है तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ओके। तो अगर यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज आ रहा है आप दे रहे हो इस सिग्नल पे तो उस पर भी इधर आ जाएगा। अगर ये ग्राउंडेड है या जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ओके। ये चीज आइडियल के केस में दोनों वोल्टेज सेम होते हैं और इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा पहली बात तो, और दोनों ही इसके अंदर। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं यही मास्टर प्रॉपर्टीज हैं ओपैम्प की। तो जो गेन इनफाइनाइट है ये क्या माना गया है? आइडियल के लिए गेन अनफाइनाइट होता है ना, और बताया था ओके भी। सर, आइडियल है तो ये गेन गेन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तो V1। गेन इनफाइनाइट होते ही ये वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। ओके वर्चुअल, सर। उसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड पे तो ये भी ग्राउंड पे आ जाएगा, ओके। सो दैट इज ओके। सो ये जो है दो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द ओपैम्प्स प्रॉपर्टीज, ओके। जो भी हम एप्लीकेशन करेंगे उसमें ये काम आएंगे हमको, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी linear applications of op-amp, okay. So put the heading linear applications. इंट्रोडक्शन में फिर और आएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे फिर बातें फिर आएंगे, ओके। सो लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ op-amp, okay. So first thing is inverting amplifier. Inverting amplifier. So inverting amplifier का मतलब क्या है? You have a op-amp, okay, this is minus plus and so resistance is V output. You are supplying something, this is RF, this is R1, okay, and you are supplying some, giving some B input here, V plus minus B input here, okay. This terminal is ground. You are getting output here, plus minus V output, okay. So इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब ये एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफिकेशन मतलब V0 आउटपुट और इनपुट का रेशो एम्पलीफायर, ओके। तो इस सर्किट के लिए एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना होगा? सपोज आई एम सेइंग दिस इज V1, ओके, so this is V1, this is V2, so this is 0, V1 is 0, तो V2 कितना हो जाएगा? 0। आइडिया V2 0 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? यहाँ पे या V इनपुट है, ठीक है। तो नाउ लिखो नोडल इक्वेशन लिखो। सो इफ आई वांट टू राइट नोड इक्वेशंस एट दिस पॉइंट, ओके। तो V1 0 माना? ये V1 तो 0 ही है ना, ग्राउंड है, ग्राउंड है तो ओके सर। तो ये भी 0 हो गया, ओके। तो सपोज दिस करंट इज फ्लोइंग हियर, नाउ आइडियल देयर विल बी I0, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो भी करंट यहाँ से आएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। सो से व्हाट इज दिस करंट, और यू राइट KCL, ओके। जो करंट यहाँ आएगा राइट KCL एट पॉइंट 0, ओके। सो KCL लिखने से क्या होगा? V इनपुट माइनस 0 अपॉन R1 इक्वल टू व्हाट? 0 minus V output upon RF. ओके, वेरी गुड। इक्वल टू 0 माइनस ये करंट, ये जो करंट है दिस इज करंट I which flowing through R1. So this current is V input, okay, minus 0 upon R1. Similarly, the same current is going here. So 0, this current is 0 minus V0 upon RF. Okay. So I want ratio of V input to V output to V input. So A. So V output upon V input. Okay. कितना आ जाएगा? Minus RF upon R1. Okay. So this is gain AV.
ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, इनपुट पता है, देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द गेन इन द सर्किट। ओके, RF upon RI है ना? RF upon R1. अच्छा, RF R1. RF upon R1. Okay, so in our question, if B input is given as 0.5 volts, okay, if R1 is given 10 kilo ohm, RF is given 25 kilo ohm, okay, so question है what is B naught and current I from resistance R1 IR निकालो कितना आएगा। So AB, okay, AB दे रखा है क्या? So B naught and A, okay. So first you have to find out V naught 1.25 volt. So AB कितना आ गया आपका? AB कितना आएगा? RF upon R1 minus 2.5. Okay, that's why because it is inverting minus RF upon okay. It's 2.5. V naught equal to minus 1.25, sir. So V naught equals to minus 1.25 और I कितना आएगा? I is equal to 0.05 ampere. 0.05. 50 milliampere आएगा, 50 milliampere में सही है सर। ठीक है ना just give me 1 minute. Am I audible? Yes, Yes, sir. Okay, so this is the one question. Okay, just let me do some more problem on inverting amplifier. Okay, so I have a circuit. सर लास्ट क्वेश्चन में IR पता करना था, हाँ, तो R मतलब R1 की RF? R1 दोनों सेम ही करंट है, करंट सेम ही दोनों में। तो सर 0.125 आएगा ना सर? क्यों करंट तो क्या आएगा? V0 1.25 दिया है, R1 10 है। V1 upon 0 upon R1, ठीक है। सो V1 देखा 0.5 वोल्ट दे रखा है, 0 R1 कितना दे रखा है? 10 किलो ओम्स, कितना आएगा ये? ओके सर, ओके माइक्रो एम्पियर। So now we have given this circuit minus plus दूर क्यों कर दिया, minus plus, okay, and we have here 40 kilo ohm, okay, so this is V naught and this is, they say, plus minus, this is ground and this is 2 volt and this is also grounded. Okay, so determine V naught, कैसे निकलेगा वरुण? Say this point is A, point B, okay, so say voltage is VA and this is VB, कितना आएगा? सर यदि आइडियल ऑप में तो सर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, आइडिया माइनस यहाँ सर ग्राउंड वोल्टेज या 2 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। ओके, तो बस निकाल लो। अब 6 वोल्ट देगा, 2 वोल्ट दे रखा है, यहाँ V0 निकाल रहा है, वापस लूप में KCL लगा दो इस पॉइंट पे, दिस इज 2 वोल्ट्स, ओके, KCL निकाल के करंट निकाल लो। सो करंट कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम, ओके, एंड 2 माइनस 2 वोल्ट्स माइनस V0 अपॉन 40 किलो ओम, तो माइनस 6 वोल्ट। हाँ निकालो। सो V0 कितना है? So this is
ओके, किलो ओम कट गया, 2 माइनस वी नॉट अपना माइक ऑफ कर देना। 8, ओके, सो वी नॉट विल बी 2 माइनस 8 माइनस 6 वोल्ट, ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करो। ये लिख लिया ना सबने? यस सर। Okay. Now I have one op-amp minus plus. Okay. This is 10 किलो ओम। Okay. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम। Okay. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R। Okay. Here we have a resistance of 10 kilo ohm. Okay. And this is my V naught. Okay. And this is grounded. Okay. So this V input. And then question, they have given the gain V naught upon V input, they have given minus 12. Okay. So they're asking, okay, what is the value of this resistance? What is the value of this resistance? 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Okay. R, you have to find out R. निकालो, कैसे निकालोगे भाई? ओपन में आपको मेनली जानना है, हमेशा केसीएल लगाना है, ठीक है, आपको आर निकालना है आपकी, ठीक है, तो आर कैसे निकलेगा बताओ? सर ये 2 पॉइंट में किससे लगाया? हाँ, 2 पॉइंट में यहाँ पे यार, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ तो तो जीरो वी है। नॉट अपॉन वी इन का रेशियो दिया है क्वेश्चन में। हाँ, वी नॉट अपॉन वी इनपुट का रेशियो दिया -12। ओके, ओके सर। तो पहले तो वी ये निकाल, इसमें आप लगा दो, इस पॉइंट पे आप लगा दो केसीएल। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका? वी इनपुट V माइनस 0/10 बाई 10 इक्वल टू क्या आएगा? 0 माइनस VA/10। 0 माइनस वी ए बाय 10 किलो ओम। ओके, 10 से 10 कट गया, तो वी ए क्या आ गया? माइनस वी इनपुट। माइनस V इनपुट। ये आपका एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो केसीएल। सपोज सब करंट बाहर जा रहा है, जैसे भी तुमको लगाना डायरेक्शन। ओके, सो वी ए माइनस 0 अपॉन 10 किलो ओम। ओके, this is outgoing, so this is VA upon R. Okay, and then VA minus V naught upon 10 kilo ohm equals to 0, और आपको V naught upon B input -12 दे रखा है, अब निकाल लो वैल्यू। सर 10/11 किलो ओम आ रही है सर। क्या R का वैल्यू पूछ कितना आ रहा है? सर R की 10/11 किलो ओम। नहीं, कैसा आएगा? सर ये लास्ट वाला टर्म कैसा है आपका? ये VA माइनस V नॉट अपॉन 10 किलो। करंट तो यहाँ पे मानो 3 करंट मान लो यहाँ पे, ये करंट, ये नोडल लगा रहे हो। क्लोज लूप में करंट 0 होता है ना, तो PA माइनस 0/10। अच्छा, मतलब एक करंट इसका 3 का मान के यहाँ पे नोडल एनालिसिस किया, यहाँ पे इस नोड पे केसीएल लगाया, तो ये Yes, sir. इससे हमको ये रिलेशन मिल गया। यस सर। अब इस नोड पे केसीएल लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करना है करो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन किया ऐसा, और तुम चाहो तो डायरेक्शन ऐसा करके भी कर दोगे तो वापस से आ जाएगी इधर, ठीक है। ये दिस विल टेक केयर ऑफ डायरेक्शन। ओके, अच्छा। सो दिस इज VA माइनस V नॉट इक्वल टू 10 किलो ओम। अब R की वैल्यू निकालो, इसमें से कितना आएगा R का वैल्यू? सो दिस इज योर VA बाय 10। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि एक जो मिनट। VA है हाँ, वो रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हुआ है ना, तो VA का जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा क्योंकि ग्राउंडेड है तो? बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, So this is okay, VA by 10. Okay,
This is also VA by 10. So 2 VA by 10. Okay. So VA by 5 किलो ओम आ गया इधर तो. सर R इक्वल टू 1 किलो. हाँ. ओके. सो और यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास बच गया VA अपॉन R बच गया हमारे पास में, और ये माइनस V नॉट. तो V नॉट अपॉन 10 किलो ओम इधर आ गया. ओके. नाउ हमको क्या करना है, VA अपॉन 5 किलो ओम प्लस VA कॉमन निकाल लो यहाँ से, 1 by 5 किलो ओम प्लस 1 by R into 10 kilo ohm equals to V naught. Okay. So now V naught upon VA. Okay. So I can get 1.5 kilo ohm plus 1 by R. Okay. Into 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2. तो 2 plus 10 kilo ohm upon R. Okay. And this is V upon VA. 2 plus 10 k ohm R, and V upon VA is minus V input. So this is minus V upon V input, and this is given minus 12. So become plus 12. Okay. So 10 kilo ohm upon R is equal to 10. So R is equal to 1 kilo. 1 kilo. This is answer. So V naught upon V in plus 12 कैसा minus given ना, V naught upon V input is given. So वो तो given है, but V naught upon VA. So VA equal to minus अच्छा, V input निकालना हमने, प्रूव किया यहाँ पे. ठीक है. So okay. Let me solve one more problem. We are given this resistance, okay, R, and this is 100 R. Okay, and this is my V naught. Okay, this is grounded. Okay, and power supply is given. जब भी पावर सप्लाई जब देखना कि सैचुरेट तो नहीं कर रहा है, minus 15 volts. Okay, and V input is given. V input is given 1.5 volts. Okay, तो बताओ V आउटपुट कितना आएगा? V आउटपुट का मैग्नीट्यूड चाहिए. सर वो RF का वैल्यू कितना, RF की वैल्यू कितना दे रखा है? हाँ, 100 R. अच्छा, R एंड 100 R के टर्म्स में. हाँ, R और 100 R. ओके. सर 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट सर. हाँ, ओके. मैग्नीट्यूड पूछा है. यस सर. दिस इज आंसर. ये गेट 19 में आया. कितने में आया गेट? 2019 में था शायद. यस सर, 19 में था ये. अच्छा. ओके. सो आई एम स्टॉपिंग हियर. अभी इसमें एक और प्रॉपर्टीज देखनी है ओपैम की. अभी तो हम लीनियर प्रॉपर्टी करेंगे 4-5 दिन तक. ओके, देन वी विल सी नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज आल्सो and some miscellaneous questions also. Okay, so I'm stopping here. Okay, thank you very much. 150 आ रहा है सर. हाँ, तो 150 कितने माइनस आ रहा प्लस आ रहा है? एक मिनट माइनस. हाँ, तो जो V आउटपुट VCC से ज्यादा हो जाएगा, तो आउटपुट हमेशा आएगा ना. अच्छा. सैचुरेशन प्रॉपर्टी. सर. हाँ सर, हम ये नेगेटिव फीडबैक क्यों लेते हैं? नेगेटिव, ताकि वो आउटपुट भी आपको पता है ना, नेगेटिव फीडबैक. अभी जैसे अगर नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव दिया, तो वैसे ही इनफाइनाइट हो जा रहा है.
अब नेगेटिव देंगे तो उसको कम कर रहे हैं ना, इनपुट को नेगेटिव दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, इनपुट को कम कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं जाता है, और ना तो हमेशा 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 सैचुरेट कर जाएगा हमेशा ही, थोड़ा सा देने से ही। सो नेगेटिव देख के क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट को कम कर रहे हैं। अभी बताएं। सर जब सर हम पॉजिटिव पॉइंट में सर जब इनपुट देते हैं, हाँ सर तब भी सर बात करेंगे अभी, अभी उसकी प्रॉपर्टी जब वो नॉन रूटिंग की बात करेंगे तो बात करेंगे अभी, ठीक है ना। अभी ठीक है दिक्कत अभी डिस्कस करेंगे इसको भी कि कैसे क्यों नेगेटिव क्यों लगाते हैं, लीनियर एप्लीकेशन में नेगेटिव क्यों करते हैं उसमें, और उसमें कैसा होता है वो भी करेंगे बात, ठीक है। अच्छा सर, इसमें फेज डिफरेंस पाई का होता होगा ना इनपुट और आउटपुट के बीच? तभी तो माइनस साइन आ रहा है। यस सर, ओके सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू।